हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। पिला माने समस्ते केमते अछ? आशा करछु तुम माने समस्ते भलरे थिबा। तो देखो पिला माने एबे हमें ए टाइगर इन द हाउस रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा। तापर पिला माने हमें एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा जोटा कि तुम्हारो इंटरनल असेसमेंट और हाफ ईयरली एग्जाम रे आसीबा। तो चलो पिला माने प्रथमे हमें देखिबा एचसीपी 1 बा पैराग्राफ 1 रो कोन सब क्वेश्चन रहिछि। फर्स्ट देखो रहिछि Who was Timothy and where was it discovered? Timothy किए कोठार ताको डिस्कवर करा जायथिला। तो चलो पिला माने तार आंसर लिखिबा। देखो आंसर रहइबो Timothy was a tiger cub. Timothy होउछु गोटे बाघ छुआ। It was discovered by the writer's grandfather when he was strolling the forest path at some distance from the rest of the hunting expedition in the तराई जंगल नियर डेरा। एति पिला माने लिखिबो। तो पिला माने एटा तुमरो 2 हाफ मार्क रो किंबा 5 मार्क्स रो आसी परिबो। तो तुमे माने एटा को भलो भाबरे एबे थारु प्रैक्टिस करि दियो जेंति तुमार एग्जाम रे किछि भी प्रॉब्लम हबनी। ताबो चलो देखिबा हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रहिछि व्हाई डिड ग्रैंडफादर अकम्पनी द पार्टी? ग्रैंडफादर कोन पई पार्टी रे जोग देथिले? Grandfather accompanied the party because he knew the forests of Seal Lake Hills better than most people. Therefore, he was requested to accompany the party, though he was not a शिकारी। से शिकारी है नथिले मध्य जेहेतु से सियाल लेक हिल को बहुत भल भाव जानी से से पार्टी रे जोग देथिले। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रहिछि The writer says that the camp was very splendid. Why? Writer लेखक कहते जे कैंपटा बहुत चमत्कार थिला कहीं आंसर लिखिबा The writer says that the camp was very splendid because it consisted of 7 large tents, one for each shikari, a dining tent and a number of servants' tents. The people who accompanied the party were served delicious food. एतिके लिखिबो। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Who discovered Timothy and when? Timothy को किए डिस्कवर करथिले आउ केते बेले? The writer's grandfather discovered Timothy when his grandfather was strolling down the forest path. At some distance from the rest of the party, he discovered Timothy from the intricate roots of a banyan tree where he was hiding. तो ये पिला माने तार आंसर लिखिबा। तापर चला देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रहिछि डू यू थिंक ग्रैंडफादर वाज वेरी बोल्ड? व्हाई डू यू थिंक सो? तुमे भाबुछ कि जेजे बापा साहसी थिले? काहे कि तुमे भाबुछ? आंसर लिखिबो Yes, I think grandfather was very bold because he could dare to accompany the hunting expedition without any hesitation. He picked the 18-inch young tiger up from the intricate roots of the banyan tree. He brought the tiger home after the camp had broken up. He took care of the tiger cub at his home like his child. तापरे से जेहेतु टाइगर कप बाघ छुआटा को घर को आनिक आसिले से जना पड़े जे से साहसी थिले। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल क्वालिटी डिड ग्रैंडफादर हैव? जेजे बापांकर कौन स्पेशल क्वालिटी थिला? How was grandfather different from other members of the party? अन्य माने जो पार्टी रे रहिथिले अन्य सदस्यों ठारू ग्रैंडफादर केमती अलगा थिले? तो आंसर लिखिबा ग्रैंडफादर was adventurous and courageous by nature. He accompanied the hunting expedition without any hesitation. He was different from other members of the party to have bagged any game, catching animals that were either dead or alive. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रहिछि
डू यू थिंक ग्रांडफादर विल पेट द टाइगर कप एट होम? तुम्हें भावुच कि ग्रांडफादर जेजेबापा बाघ छुआटी को पोषा बनई? Yes, I think grandfather will pet the tiger cub at home because he picked the cub from the intricate roots of the banyan tree and brought him home after the camp had broken up. ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ଶେଷ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଟାଇଗର କପ୍ଟିକୁ ଘରକୁ ଆଣିକି ଆସିଥିଲେ, ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ପୋଷା ବନେଇଥିବେ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର ପାରାଗ୍ରାଫ 1ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଚଲା ଦେଖିବା ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ପାରାଗ୍ରାଫ 2ଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 2ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି। ଏ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ରହିଲା ପାରାଗ୍ରାଫ 2ରେ ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଏବେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବ, ଇନ୍ ଦିସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି Timothy, his two companions, Toto the monkey, a mongrel puppy, the writer, his grandparents, and the cook are there in this part of the story. ताले पिला बने ये जो पार्ट रहिला तुमने सेकेंड पार्ट एथिरे किए रहिछंदी टिमोथी रहिछि। टिमोथी किए टाइगर कप, तार दुईटा सांग बा टू कंपनीज किए टोटो द मंकी एंड ए मंग्रेल पपी। तापरे राइटर अछंदी हिज ग्रांड पेरेंट्स माने ग्रांडफादर और ग्रांड मदर। तापरे द कुक एतिक रहिछंदी। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रहिछि हु नेम्ड द टाइगर कब एंड हु ब्रॉट इट अप। द राइटर्स ग्रैंडमदर नेम्ड द टाइगर कब। किए ना देथिले राइटर्स ग्रैंडमदर टाइगर कब टिमोथी एंड द कुक मोहम्मद ब्रॉट इट अप। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वाज द डाइट ऑफ द टाइगर कब। बाघ छुआ जो टिमोथी थिला तार डाइट कौन थिला, से कौन खाद्य खाउथिला। एट फर्स्ट द डाइट ऑफ द टाइगर कब वाज मिल्क। प्रथमे से कौन पिउथिला, क्षीर पिउथिला। देन मिल्क प्रूव्ड टू रिच फॉर हिम एंड ही वाज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल टू बी फॉलोड लेटर बाय टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स। तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख रही हु वाज टिमोथीज कंपेनियंस एट होम। आंसर लिखिबा टोटो द मंकी एंड ए स्मॉल मंग्रेल पपी वेयर टिमोथीज कंपनीज एट होम। टिमोथी रो कंपनी किए थिले टोटो द मंकी एंड ए स्मॉल मंग्रेल पपी। नेक्स्ट देख रही व्हाट वाज टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट। टिमोथी रो फेवरेट खेल कौन थिला। हाउ डिड द राइटर बिकेम टिमोथीज फेवरेट। राइटर केमती टिमोथी रो फेवरेट हेतिले। द आंसर लिखिबो टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वाज टू स्टक एनीवन हु शुड प्ले विथ हिम। Therefore the writer became Timothy's favorite when he came to live with grandfather. ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ଫେଭରାଇଟ୍ ବନିଗଲେ। ତାପରେ ଚଲ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କେମ୍ ଓଭର ଟିମୋଥି ହ୍ୱେନ୍ ହି ୱାଜ୍ 6 months old। ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥିକୁ 6 ମାସ ହେଇଗଲା ତ ତାର କ'ଣ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା। आंसर लिखिब व्हेन टिमोथी वाज 6 months old a change came over him. He grew steadily less friendly. When out for a walk with the writer, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet dog picnics. तापर देखो नेक्स्ट कौन रही ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसपोर्ट टिमोथी टू द जू। ग्रैंडफादर कौन निष्पत्ति नेले जे टिमोथी को चिड़ियाखाना को पठे देवाई। व्हाई कहीं। आंसर लिखिब टिमोथी बिगन टू स्टॉक मोहम्मद अबाउट द हाउस with what looked like villainous intent. He grew less friendly. He tried to steal away to stalk a cat and a pet picnic. At night, Timothy killed and ate up chicks. So grandfather decided to transport Timothy to the
तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रही व्हेयर डिड ग्रैंडफादर टेक हिम एंड हाउ। जेजे बापा तांको कोठिकी नेले आ किपरि नेले। आंसर लिखिबा ग्रैंडफादर टुक हिम टू द जू एट लखनऊ which was a distance of 200 miles away from their home. To get Timothy to the zoo, he reserved a first-class compartment for himself and Timothy, as no one would like to travel in the same compartment with them. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रही डू यू थिंक टिमोथी विल बी हैप्पी एट द न्यू प्लेस। तुम्हें भावुच कि टिमोथी नुआ जगार खुशी थो बोली। नो आई डोंट थिंक टिमोथी विल बी हैप्पी इन द न्यू प्लेस बिकॉज ही विल लॉस हिज फ्रीडम एंड फ्रेंडशिप। ही विल बी कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर केज। ही विल रिमेन अवे फ्रॉम हिज मास्टर एंड अदर कंपेनियंस। कारण से निजर मालिक एवं अन्य सांग मान दूर थिला आ से कौन कला गोटे केज्रे रहा जहाँफल कि केज मैंने कौन जनता बा जो चिड़ियाखाना देखि नंदनकानन जो मैंने जाइथिबो को मैंने जाइछो कमेंट सेक्शन में जनइबो। तो जेहेतु से भितर रहिला तो तार आउ किछि भी फ्रीडम रहिला नहीं। तापर चला देखिबा नेक्स्ट कौन रही। नेक्स्ट देख पैराग्राफ 3 पिला माने एटा पैराग्राफ 3 रो कौन क्वेश्चन अछि देखिबा। फर्स्ट देछि रीड द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड से व्हाट इट इज अबाउट। लास्ट पार्ट स्टोरी रो पढ़िबा आ सेटा कहा विषय रे कहूची सेटा लिखिबा। तो चलो पिला माने आंसर लिखिबा। देखो कौन लिखिबा। द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज अबाउट ग्रैंडफादर्स लास्ट विजिट टू द जू and the familiar relationship that exists between man and animals. Man and animal share each other's emotions. Though grandfather stroked and slapped an unknown tiger, thinking it to be Timothy, it also appreciated grandfather's emotion by licking his hands. Though it was a furious tiger and his departure from the zoo with a heavy heart. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रही व्हेन डिड ग्रैंडफादर विजिट द जू एंड व्हाई। ग्रैंडफादर केते बेले जू बुलिबा को गले आउ काहेकि। आंसर लिखिबा अबाउट 6 months later the transfer of Timothy to the zoo, grandfather again visited the zoo because at that time grandfather and grandmother had gone to Lucknow to visit some relatives. So grandfather had an opportunity to visit the zoo to know about Timothy. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रही व्हाट डिड ग्रैंडफादर डू एट द केज व्हेयर टिमोथी वाज केप्ट। ग्रैंडफादर कौन कले जो टिमोथी के रखा जाइथिला। आंसर लिखिबो ग्रैंडफादर वेंट स्ट्रेट टू दैट पर्टिकुलर केज व्हेयर टिमोथी हैड बीन लॉक्ड अप and saw the tiger crouched in a corner. Putting his arm through the bars of the cage, he stroked the tiger's forehead and ticked his ear as the tiger approached the bars. The tiger allowed grandfather to put his both hands around his head. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रही हाउ डिड द टाइगर बिहेव टुवर्ड्स ग्रैंडफादर। तो पिला माने पाखटी ग्रैंडफादर प्रति तार व्यवहार कौन रही। आंसर लिखिबो द टाइगर बिहेव्ड वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स ग्रैंडफादर। ही अप्रोच्ड द बार्स ऑफ द केज and licked grandmother's hands. He seemed to sense grandfather's emotion towards him and behaved accordingly. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रही व्हाट डिड ही सजेस्ट टू द कीपर। से कीपर को कौन सजेशन देले। ही सजेस्टेड द कीपर शिफ्ट द टाइगर टू अनदर केज as he was frightened by the stupid leopard in the nearby cage. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो रही वाज द टाइगर रियली टिमोथी।
से जो बाघटा थिला से कौन सतरे टिमोथी थिला कि? हाउ डू यू नो दिस? तुम्हें यह किपरि जानुछ? आंसर लिखिब नो द टाइगर वाज नॉट रियली टिमोथी. We know it from the story when the speaker told grandfather that Timothy had died of pneumonia 2 months ago and that was another dangerous tiger brought from the hill only a month ago. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट रही व्हाट डिड द कीपर से टू ग्रैंडफादर अबाउट द टाइगर? कीपर जेजे बापा को टाइगर विषय कौन कहले? आंसर लिखिब द कीपर टोल्ड ग्रैंडफादर दैट द टाइगर वाज नॉट टिमोथी. Timothy had died of pneumonia 2 months ago. That was a different tiger that had been brought from the hills 1 month before. That was a dangerous tiger. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट रही व्हाट मेड ग्रैंडफादर गिव ए स्कर्नफुल लुक एट द कीपर? जेजे बापा कहीं रागिकी कीपर आड़ को चाहिए? आंसर लिखिब grandfather came to know from the keeper that Timothy had died of pneumonia. He was heartbroken at the untimely death of his dear Timothy. The first keeper whom the grandfather met the first time was afraid of the tiger near whom he stayed all the time. They never tried to develop their relationship with the animals. So grandfather gave a scornful look at the keeper and left the zoo. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखो व्हिच कैरेक्टर इन दिस स्टोरी डू यू लाइक मोस्ट एंड व्हाई? ए गपरे तुमको को कैरेक्टरटा भल लगुची आ कहीं? लिखिब आंसर रे द कैरेक्टर वी लाइक मोस्ट इन द स्टोरी इज ग्रैंडफादर because he is the dominating character having a unique personality. He was a great lover of animals. He had kept with him a monkey and a mongrel puppy. He had also kept Timothy, a tiger cub, as a pet at his home. After the tiger had been transferred to Lucknow Zoo, he revisited the zoo to know about Timothy. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट देखा रही कैन यू गिव अनदर टाइटल टू द स्टोरी? तुम्हें एक गपर अन्य गोटे टाइटल दे पारिबो कि? गिव रीजन्स फॉर योर न्यू टाइटल. कहीं तार नुआ टाइटल दब रीजन सहित लिख. ग्रैंडफादर ए ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स इज एन अदर टाइटल फॉर हिज स्टोरी बिकॉज ग्रैंडफादर वाज ए ग्रेट लवर ऑफ एनिमल्स and he had kept with him a monkey and a mongrel puppy. He was treating the animals with great affection and love. Even he treated a tiger, the ferocious animal, with love and affection in the zoo at Lucknow. ताले पिला माने तुमरो 10टा क्वेश्चन रहिथिला पार्ट 3 रो. तो पार्ट 3 रो क्वेश्चन एबे सरिला. तापर चलो देखिबा हमर नेक्स्ट कोन रहिछि. नेक्स्ट देख ये राइटिंग देछि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 50 वर्ड्स. तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पिला माने एटा लिखिबा. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन रही देखिबा. हु वाज टिमोथी? टिमोथी किए? व्हाट मेड ग्रैंडफादर टू ब्रिंग हिम होम विथ हिम? ग्रैंडफादर कहीं ताको तांका घर को आनिथिले. तो चलो पिला माने यार आंसर लिखिबा. आंसर लिखिबा Timothy was a tiger cub that was discovered by grandfather on a hunting expedition in the Tarai jungle near Dera. When the sportsmen of the party were giving up all hopes of finding a tiger and started shooting at jackals, grandfather strolled around the forest path at some distance from the rest of the party and discovered a baby tiger from the intricate roots of a banyan tree. He picked it up and brought it home when the camp had broken up.
तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही। नेक्स्ट रही हु वेयर टिमोथीज कंपेनियंस एंड हाउ वाज ही ब्रॉट अप एट होम। टिमोथीर फ्रेंड माने सब किए थिले आ किपरि से लालित पालित होइथिला। तो चलो लिखिबा टोटो द मंकी एंड ए स्मॉल mongrel puppy were two companions of Timothy. Toto the monkey was bold enough to pull the young tiger by the tail. When Timothy became angry, Toto climbed up the curtains. At first, Timothy was afraid of the puppy. Later, he allowed the puppy to crawl on his back and rest there. They became good friends. At first, Timothy was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by the cook. Then he was put on a diet of raw meat and cod liver oil, and later on he was given an attractive diet of pigeons and rabbits. तापर चलो देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रही व्हाई डिड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू ए जू। ग्रैंडफादर कहीं डिसीजन नेले जे टिमोथी को चिड़ियाखाना रे छाड़ देबा पई। आंसर लिखिबा व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months old a change came over him. He became less friendly. Sometimes when the writer was taking him out, he would try to steal away to stalk a cat or other pet animals. He even did not spare the poultry house. At night he was entering stealingly the poultry house, and the family members found feathers lying all over the veranda in the morning. So most often Timothy had to be changed off. And finally he began to stalk Mahmud about the house with villainous intent. Grandfather decided it was time to transfer him to a zoo. तापर ग्रैंडफादर निष्पत्ति नेले ताको जू रे छाड़ी देबा पाई। तापर चला देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट रही व्हाट थिंग्स डिड ग्रैंडफादर डू एट द केज व्हेन ही विजिटेड द जू। जेजे बापा जेतेबेले जू को गले तो सेतेबेले से कौन देखिले। About 6 months later, when the writer's grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather had an opportunity to visit the zoo and see Timothy. Arriving at the zoo, he went to the particular cage where Timothy had been locked up. He saw the full-grown tiger crouched in a corner, climbing the railing and putting his arm through the bars of the cage. Grandfather put both his hands around his head as the tiger approached the bars. He stroked the tiger's forehead and ticked his ear. When he growled, grandfather smacked him across the mouth. The tiger also licked grandfather's hands, so the meeting was very cordial. तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड द टाइगर रिएक्ट टू ग्रैंडफादर्स एक्टिविटीज। जेजे बापांगर जो कार्यकलाप को लेके बाघ कौन रिएक्ट करथिला। व्हेन ग्रैंडफादर स्ट्रोक्ड द टाइगर्स फोरहेड एंड टिक्ड हिज ईयर, द टाइगर स्टार्टेड लिकिंग ग्रैंडफादर्स हैंड्स. There was a leopard in the nearby cage. When he sneered at the tiger sprang away. Every now and then the leopard would rush at the bars, and the tiger would slink back to his corner. The tiger's reaction to his grandfather's activities was very positive and friendly. He seemed to sense grandfather's emotion and act accordingly. तापर चला देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन। तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट मेड ग्रैंडफादर बिकम सो सैड एंड व्हाट हैपेंड टू हिम इन द एंड। जेजे बापा कहीं दुखित हेले आउ शेष रे तांको सहित कौन घटिला।
आंसर लिखिब ग्रैंडफादर केम टू नो फ्रॉम द कीपर दैट Timothy died of pneumonia 2 months ago. The tiger whom he thought Timothy was a ferocious tiger brought from the hills last month. Hearing this news, grandfather became very sad, as Timothy was very dear to him. Again, he felt very sorry to know about the unfriendly treatment of the keepers to the beast kept in the zoo. They never showed kindness towards the animals and never tried to develop a friendly attitude towards them. तापर चला देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट रही कैन यू सजेस्ट सम मोर लाइन्स टू द एंड ऑफ द स्टोरी इन ए डिफरेंट वे तो पे मैंने से कहे किछिटा लाइन सजेस्ट करने अन्य किसी वे जमी स्टोरीटा एंड हो पार तो देख कौन लिखा द सैड न्यूज फॉर द ग्रैंडफादर वाज द डेथ ऑफ टिमोथी फ्रॉम pneumonia 2 months ago. If that had not happened, it would have been a better story. The tiger would have shifted to a different cage. Grandfather would have spent some more happy moments with the tiger. If Timothy had not died, grandfather would have returned home happily. The ending of the story would have been delightful. तो पे मैंने ये तुम कंप्रेशन क्वेश्चन सरला तापर चलो देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही नेक्स्ट देख एक्टिविटी ए देजी रीड द स्टेटमेंट अंडर कॉलम ए एंड राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर अंडर बी हु सेड किए कही क्या कही द फर्स्ट वन हैज बीन डन फॉर यू गोटे तुम मानी करा आई बिकम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट किए कहते द राइटर कहते टू होम क्या कहते द रीडर्स को कहते तापर चलो पिला माने आउ जो गुड़ाक रहा सेंटेंस सेटा किए क्या कही चल लिखा तापर देख नेक्स्ट रही आई एम टॉकिंग टू टिमोथी हु सेड किए कहते ग्रैंडफादर कहते टू होम क्या कहते द फर्स्ट कीपर नेक्स्ट इट इज नॉट योर टाइगर हु सेड किए कहते द सेकेंड कीपर टू होम क्या को ग्रैंडफादर को तापर चलो देखा नेक्स्ट रही आई रियलाइज ही इज नो लॉन्गर माइन किए कहते ग्रैंडफादर क्या कहते द सेकेंड कीपर नेक्स्ट ही डाइड 2 months एगो हु सेड किए कहते द सेकेंड कीपर क्या को ग्रैंडफादर गुड नाइट टिमोथी ग्रैंडफादर कहते क्या को टिमोथी की कहते तापर चलो देखा नेक्स्ट कौन रही नेक्स्ट देख रीड द फॉलोइंग जम्बल्ड सेंटेंस and arrange them in proper order to get the summary of the story the tiger in the house. तो पे मैंने एक प्रॉपर ऑर्डर रे सजेबा जेमती आमे स्टोरीटा आमर कंप्लीट रहिबो केतरा रही देख 9टा सेंटेंस रही तो चलो एबे सजेकी लिखिबा तो देख पे मैंने प्रथम रहिबो तुमर 3टा टिमोथी वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन एंड वाज ब्रॉट होम तापर नेक्स्ट रहिबो Timothy was brought up properly with an attractive and good diet. Next रहिबा तुम्हारा 9 Timothy lived happily like one of the members of the writer's family. Next रहिबा 5 when Timothy was about 6 months old, a change came over him and he became less friendly and more furious. तापरे रहिबा 1 number sentence grandfather took Timothy to a zoo in Lucknow. तापर रहिबा 4 number the zoo authorities were glad to receive the well fed and fairly civilized tiger as a gift. तापर नेक्स्ट रहिबा 6 number about 6 months later grandfather visited the zoo to see Timothy the tiger. Next रहिबा 8 the keeper said that the tiger had died 2 months before. Next रहिबा 7 ग्रैंडफादर लेफ्ट द जू भेरी सैडली तारे पे मैंने ये तुम समस्त क्वेश्चन आंसर डिस्कसन हो जाए जदि तुम मानक भिडियोटी भल लगी निश्चित भाव में लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर निज फ्रेंड मान सहित शेयर कर।
थैंक यू।